Okay. Yeah. So can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So yes, topic for today is frequency distribution. Okay. So we're doing a number of new formulas in this. Okay. Now, first of all, you need to understand what do you mean by frequency distribution. You all have done basic stats, right? You know how to prepare, how to find out frequency, right? uh, just an overview to make you people remind. जैसे हम करते थे ना पहले इकोनॉमिक्स में भी हमने लोगों ने किया है बेसिक स्टैट्स 11th में. If few numbers are given to you 1 2 3 5 6 1 2 6 4 7 8, so we used to find out frequency, right? ये तो हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे आपको इंडिविजुअल नंबर्स दिए हुए हैं, राइट और रॉन्ग? Do Yes, people agree? Remember, this is our individual series, right? And one is your discrete series, and third is your continuous series. So one is your individual series, second is your discrete series, and third is your continuous series. Right? What's the difference between the three? First, that is your individual series. You do not have any frequency as such, or only the individual numbers are given to you. Right, in discrete series, for each number you find out the frequency. Right, for example, number 1 has frequency 1. Okay, number 2 has frequency 2 because 2 comes 2 times. Right, number 3 has frequency 1, and so on and so forth. Basically, your x values, when they have a definite uh, value, right? When they are not in decimals, when they are not in fractions, that is basically your discrete series. But you find out frequency for your discrete series as well. Clear to everyone? इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट एक बार दोबारा बता दीजिए. Individual is when you just have individual numbers, you do not have frequency. Right, this is your individual series when just individual numbers are given to you. Okay, discrete is when you find out the frequency of these values. So one comes 2 times over here and here, right? Then 2 also comes 2 times, 3 comes 1 times, 4 again 1, 5 again 1, 6 it's there 2 times, right? So when I have found out the frequency of your numbers, how many times they come, how many times they are repeating, that is your discrete series. But in other words, your discrete series doesn't have any decimal. It has a definite value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that is your discrete series. Clear to everyone? इतना यहाँ तक? मैम कंटिन्यू सीरीज के अंदर जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या फिर लगातार हो रहा हो 1 अभी 2 3 4. कंटिन्यूस पे तो मैं आ रही हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट बताया. ओके मैम, इतना क्लियर क्लियर है. हुआ यस मैम. सबको? Yes, ma'am. Okay. In case of continuous series, for x you have a class interval, right? So if I make the class interval 1 to 5, then 5 to 10,
चलो ऐसा कर लेते हैं। So you have 1 to 5. Then you have next class interval from 5 to 10. Then your next class interval is from 10 to 15. So in that case, I don't know what's the setting, why it's showing 5th January. Yes, okay. And then we have another class interval from 10 to 15. So basically, these are class intervals. When I say class intervals, uh, basically it can take any value between 5 to 10. I'm not talking about any specific value, right? Rather, it can have any value, right? So when we talk about, yes, so when we talk about, and then I'm calculating the frequency कि 1 से 5 के बीच में कितने numbers हैं, 5 से 10 के बीच में कितने numbers हैं, and 10 to 15 के बीच में कितने numbers हैं. So when I'm talking about class intervals, that is basically your continuous series. Now, it can take any value. We are not talking about any definite value. It can take the value 1.5 also, right? There can be a value 2.5 also, and so on. जैसे discrete के case में तो specific value we were talking about. यहाँ पे it can even take values in decimals and so on. Is it okay? Individual, discrete, continuous. कंटिन्यूस क्लियर नहीं हुआ. Basically you are just preparing class intervals. You are making class intervals. ये तो सबने 11th में किया होगा. मैं तो इनफैक्ट करवाने भी नहीं वाली थी. I was assuming कि सब लोगों को पता होगा. मेंबर्स जब आप क्लास इंटरवल्स होते हैं. हाँ क्लास इंटरवल से और आप क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो बस. ओके मैम. ठीक है. तो जब आप क्लास इंटरवल की बात कर रहे हो तो उस क्लास इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक वैल्यू. वो ये यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास इंटरवल कि 1 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स फॉल कर रहे हैं वो आप 1 to 5 वाले क्लास इंटरवल में लिखोगे. याद है ना आपको, आप लोग टैली बार्स बनाते होगे. यस मैम. तो टैली बार्स क्यों बनाते थे? टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे हमें कोई वैल्यू मिलती थी बिटवीन अ क्लास इंटरवल, हम उसके अगेंस्ट एक टैली बार बना देते थे. एंड अल्टीमेटली वी यूज टू काउंट द नंबर ऑफ बार्स एंड वी वुड राइट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट दैट नंबर. क्लियर हो गया. Right. Clear to everyone? See, I cannot see. हाँ, you will have to speak. I hope किसी को doubt नहीं है. Can I move to the next thing? यस मैम. Okay. Yes, ma'am. Okay. So next is your after. So basically, in our frequency distribution, we are concerned about. We are supposed to find out. Uh, we are supposed to perform continuous series, right? Frequency distribution in case of a continuous series, and we'll be generating random numbers. ठीक है. Random numbers between a limit, right? Let us say generate random numbers between 500 to 600, uh, or and then we'll be finding out the frequency, and we'll be performing different functions, right? Like finding out the mean and the standard deviation and so on. So for that, you first need to find out, you would first need to generate few numbers, right? That is that they are basically random numbers that you are supposed to generate. Okay, so in the question, always the limit will be given to you. For example, generate 50 random numbers between 500 to 600. Okay, तो जो random numbers होंगे, they will fall between 500 to 600. Okay,
So for generating random numbers, there are two formulas that we can use. First formula is the easier one, तो पहले मैं वो बता रही हूँ. The formula is rand between, right? Rand between एक formula है, नाम से ही पता चल रहा है. Rand basically comes from the word random. So if I have to generate random numbers between any two numbers, देखो वहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है, returns a random number between the number you specify. ठीक है, तो आप जो नंबर्स स्पेसिफाई करेंगे उसके बीच में ये कोई भी रैंडम नंबर्स जनरेट कर देता है. ओके, आप बोलेंगे कि हम रैंडम नंबर्स खुद क्यों नहीं जनरेट कर लेते, बिकॉज इट्स अ टीडियस टास्क. व्हाई शुड वी राइट 100 numbers or 50 numbers ourselves? Why don't we allow Excel to generate those numbers for us, and then we'll perform the operations. ठीक है, so to generate the random numbers between two numbers, we use the formula equal to rand between and bracket open, and then it will ask you the bottom number and the top number. So let us say my question is generate 50 random numbers between 500 and 600. So my bottom number, my lower number is 500, and then I put a comma, and my top number is 600, and I close the bracket. The moment I'll press enter, it will generate any random number between 500 to 600. Clear to everyone? Yes, ma'am. You people can also write, लिख लो मेरे साथ साथ formula equal to rand between and then generate random numbers between 500 to 600. Yes, can I press enter if you people have written the formula? Yes, ma'am. So I press enter and मेरा random number आया है 518. हर एक का रैंडम नंबर डिफरेंट आया होगा आप सबका. तो Yes, फ्रीक्वेंसी ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है वेर इन वी पीपल कैन नॉट कंपेयर कि हम लोग अपना आंसर मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सबके रैंडम नंबर्स डिफरेंट आएंगे, राइट right? और फिर सबकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट आएगी. तो आप सबका रैंडम नंबर डिफरेंट आया होगा, सबका 518 नहीं आया होगा. So I have generated one random number, and now I have to create 50 numbers. So I'll just drag it, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. And I drag it downwards. 1, 2, 3, 5. 60 over random numbers generate. Yes. So I have generated 50 random numbers over here. ठीक है, 10 मैंने ऐसे ड्रैग कर लिया हॉरिजॉन्टली और 5 मैंने वर्टिकली ड्रैग कर लिया, तो 50 नंबर्स जो है वो जनरेट हो गए मेरे. ओके, Okay, ma'am. ओके. Then this was one method to generate random numbers. There is another method to generate random numbers, that is equal to rand. वहां तो हमने rand between यूज किया था कि हमें एक रैंडम नंबर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन टू वैल्यूज. जब आपको ऐसी कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना हो, राइट, यू डू नॉट basically find, you do not want to give any lower limit or upper limit, you just want to find out any random number, then we use the formula equal to rand. ठीक है, एंड उसमें क्या होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस. अगर आप इक्वल टू रैंड
ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे तो इट विल जनरेट इन एनी रैंडम नंबर, बट इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 ओनली। तो मैं अगर कहीं और भी लिखूं, आई राइट द फॉर्मूला अगेन, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें हम कुछ लिखते नहीं है, एंड देन आई प्रेस एंटर, इट जनरेट्स एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक बाकी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now in this case it has generated a random number between 0 to 1, ठीक है, और मुझे तो रैंडम नंबर चाहिए बिटवीन 500 to 600। तो इस केस में हम इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले इसमें से तो हम डेसिमल प्लेसेस हटाएंगे, ठीक है। टू रिमूव द डेसिमल प्लेस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 100। फॉर्मूला बार में देखो, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट विद 100, इसने मुझे एक नंबर दे दिया 72.64। ओके, 72.64। नाउ बट आई हैव टू जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 500 to 600, राइट। और ये मुझे मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, 100 तक के ही नंबर्स देगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसने नंबर जनरेट किया बिटवीन 0 to 1। तो अगर हम 0 to 1 में अपर लिमिट भी ले लें, अगर ये 1 नंबर भी जनरेट करे तो 1 into 100 मैक्सिमम ये 100 तक ही मुझे वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। यस और नो? यस मैम। राइट। तो और मिनिमम ये मुझे वैल्यू दे सकता है 0, मैक्सिमम मुझे वैल्यू दे सकता है 100, क्योंकि अगर मान लो ये 0 to 1 के बीच में अगर ये 1 वैल्यू लेता है तो 1 को 100 से मुझे 100 वैल्यू दे देगा। और अगर ये 0 से 1 के बीच में मिनिमम वैल्यू ले लेता है 0, तो मुझे ये मिनिमम वैल्यू दे देगा 0। 0 into 100 is 0, right? Right or wrong? Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if my basic number is 500, my minimum number is 500, then to whatever value it is calculating, if I add 500, तो उस केस में मेरा हर केस में मिनिमम नंबर तो 500 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये 0 नंबर जनरेट करता है तो उसमें प्लस 500 कर देगा, तो एटलीस्ट मेरा 500 नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें प्लस कर दिया 500। लॉजिक सबको क्लियर है क्यों 500 प्लस किया? Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमने क्या किया, रैंडम नंबर जनरेट किया, क्योंकि वो डेसिमल्स में था, 0 से 1 के बीच में था, इसलिए हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बट क्योंकि हमारे मिनिमम नंबर 500 होना चाहिए, हमें 500 से 600 के बीच में जनरेट करना है, तो इसलिए मैंने इसमें प्लस 500 कर दिया। अगर मान लो आपको नंबर जनरेट करना पड़ता बिटवीन 200 to 300, तो आप इसमें क्या ऐड करते? 200. 200. 200, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? Okay, now still the number is in decimals, right? I want to round it off. I want to round this number. So, when you want to round a particular number, right, what we do is we apply another formula that now I'm telling you people, that is equal to round. अब राउंड में बहुत सारे हैं नंबर्स, राउंड डाउन, राउंड अप, मैं डिटेल में करवाऊंगी। अभी मैं सिंपल आपको राउंड बता रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज व्हेन यू राइट राउंड एंड यू ओपन द नंबर and you open the bracket, it will ask you for the number which you want to round off. For example, 5.76 I want to round off, and then it will ask you for how many number of digits you want to round off. You want to round it off to 1, 2, 0 number of digits and so on, right? So मैं आपको 0 करके दिखाती हूँ। मैंने 5.76 लिया, एंड अगर मैं 0 लिखती हूँ तो जो इसका नेक्स्ट वो होता है, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर होता है। राउंडिंग ऑफ आप सबको पता ही है कैसे करते हैं, इक्वल टू राउंड। इफ आई राइट
0.23, तो ये 5 दे देगा। जैसे राउंडिंग ऑफ हम लोग करते हैं, 0.5 से ऊपर है तो अपर साइड की तरफ, एंड 0.5 से नीचे है तो लोअर साइड की तरफ। तो सेम थिंग इट इज डूइंग इट फॉर मी। क्लियर है राउंड फंक्शन? यस, राउंड फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? कॉमा में अगर 0.1 लिखे देन? नहीं, 0.1 नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। उसमें आप 1 2 3 -1 2 3 लिख सकते हो और 0। जब आप 0 लिखते हो तो ये नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करता है, राइट। जब आप -1 -2 -3 लिखते हैं तो वो लोअर की तरफ जाता है। जब आप +1 2 3 लिखते हो तो अपर की तरफ जाता है, अपवर्ड्स राउंडिंग ऑफ करता है। अभी मैं करवाऊंगी, अभी के लिए मैं इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया सिर्फ राउंड फंक्शन। ओके मैम। ठीक है। तो अब इस केस में जो मेरा ये नंबर जनरेटेड है ये राउंडेड ऑफ नहीं है, तो जहां मैंने ये रैंडम नंबर जनरेट किया है, अगर इससे पहले मैं राउंड फंक्शन लगा दूं, राइट, सो इफ आई राइट इक्वल टू राउंड, राइट, देन वो पूछता है कि किस नंबर को राउंड ऑफ करना है। देखो नंबर आता है ना, पहले आप जब भी एक फॉर्मूला लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो नंबर तो मेरा कौन सा हो गया है, जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 100 + 500, जो नंबर मेरा इससे जनरेट हुआ है उसको राउंड ऑफ कर दे टू जीरो नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। So this is my second formula of calculating a round number between 500 to 600. You can write the formula equal to round ब्रैकेट ओपन। जब आप राउंड लिख के ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मतलब आप बता रहे हैं कि कौन से नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने बोला कि रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 500 एडेड टू इट, जो ये नंबर जनरेट हुआ इसको राउंड ऑफ करो टू जीरो a number of places, and then I close the bracket. Can I press enter? यस मैम। सबका अब मैं एंटर प्रेस करके दिखाती हूँ। तो एक राउंडेड ऑफ नंबर आ गया 530। नाउ इट्स नो मोर इन डेसिमल्स, राइट। एंड if I drag this number downwards, तो इसने मुझे सिमिलरली 50 नंबर्स जनरेट करके दिखा दिए बिटवीन 500 to 600। आप देख लो कोई भी नंबर 600 से ज्यादा नहीं होगा और 500 से कम नहीं होगा। ओके, so now you people will do it. You are supposed to generate 100 random numbers between 100 to 200, ठीक है। और दोनों मेथड से कैलकुलेट करके बताना है, रैंड बिटवीन से भी और राउंड वाले से भी। करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम जो हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें जो कोमा के बाद हमेशा जीरो ही लगाना है या फिर वन हाँ, टू? अभी इसी केस में 0, 1 2 वाला भी मैं बताऊंगी, फिलहाल के लिए ओके। 0। ठीक है, आई एम कमिंग बट इन 2 minutes।
Yes, done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों मेथड से. Yes, ma'am. Done. Okay, so both the methods are correct. You can use any one of them. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक particular method ही use करना है. Nothing is mentioned in the question. The only thing that is mentioned is that you are supposed to generate random numbers. ठीक है, so whichever method seems easier to you, you can use that. Okay, so now let's move ahead. Okay, now if you look at these numbers, you can see these numbers, they are changing. Right, they are not fixed. Can you see that? मैं ये numbers remove कर देती हूँ because I need only 50 numbers. So you can see these numbers are changing every time. जब मैंने initially insert किया था तो 518 था, फिर 510 हुआ, अब 538 हो गया. मैं कोई भी operations perform कर रही हूँ तो ये numbers change हो रहे हैं. अब देखो अभी फिलहाल first number 538 है, वो 587 हो गया. राइट, ऐसे तो मैं प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाऊंगी अपने नंबर्स की, बिकॉज एवरी टाइम दे आर चेंजिंग. I want fixed numbers, right? So what we do is we need to uh, you can say we need to fix these numbers before we move ahead. So these are, I'll just give it a heading. These are random numbers, right? And now I have to fix these random numbers. I need to prepare fixed numbers. ठीक है, तो अब इन रैंडम नंबर्स को फिक्स कैसे करना है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट. और थोड़ा सा, so what we are going to do is first we are supposed to select these random numbers and copy them. ठीक है, तो कंट्रोल सी कर लिया मैंने, ये कॉपी हो गए. The moment they will get copied, you will see this dotted line starts appearing around those numbers. Right. So now I have copied these numbers and now I'm going to paste these numbers over here. But it's very important, आपको यहाँ पे simple control V नहीं लिखना है. राइट, प्रेस करना है. सिंपल नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे. रादर पेस्ट में ऑप्शंस आते हैं, पेस्ट स्पेशल इफ यू कैन सी. राइट, आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो जिनका पुराना है उनमें हो सकता है ऐसे ना लिखा हुआ है, उनके में पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो. राइट, अगर आपके में डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है तो उसमें वैल्यूज करके एक ऑप्शन है, आप उसको चेक कर दो. और अगर ऐसे दिख रहा है जैसे मेरी स्क्रीन पे है तो इसमें पेस्ट वैल्यूज का एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें से आपको पेस्ट वैल्यूज लेना है. राइट, यू कैन सी वैल्यूज में भी अलग अलग ऑप्शन है, हमें सिंपल पेस्ट वैल्यूज लेना है. तो एज अ रिजल्ट क्या करा इसने, अब ये वैल्यूज को इसने पेस्ट कर दिया. अब ये वाली वैल्यूज जो है वो फिक्स हो गई है. अगर आप नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कई बार आपके जैसे वहां पहले वाले नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, आपके ये नंबर्स भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं. पेस्ट वैल्यू करके क्या होगा, अब इसने वैल्यूज को एज इट इज ले लिया. राइट, इट हैज pasted the values as such. So even if now these numbers, even if they get changed, this will not get changed. तो अब देखो ऊपर वाला नंबर अब 577 से चेंज होकर 598 हो गया, बट ये वैल्यूज चेंज नहीं हुई, ये फिक्स्ड हो गई हैं. So you have to be very, very clear. I'm repeating it again. You have to select those number, Control C, copy कर लिया, ऐसे dotted line appear हुई, फिर जहां उनको paste करना है, go to that place, again right click, paste special में you have to select values. Right, values वाला option, normal paste नहीं करना है, Control V नहीं करना है. ठीक है, और escape बटन प्रेस करोगे तो ये जो dotted lines हैं वो हट जाएगी. Clear to everyone?
ये मैंने सिर्फ 2-3 बारी करके दिखाया है आपको, ताकि आई एम रिमूविंग इट, अदरवाइज आई डोंट नीड दीज नंबर्स। ठीक है, अब रैंडम नंबर आपके हर वक्त जनरेट होते रहेंगे। वी आर नो मोर कंसर्न अबाउट दीज रैंडम नंबर्स नाउ। अब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। अब हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो फिक्स्ड नंबर्स की करनी है। बट यू हैव टू जनरेट तो करने ही पड़ेंगे ना, यू हैव टू जनरेट रैंडम नंबर्स। Unless and until you don't generate random numbers, you'll not be able to generate these fixed numbers. So generate तो आपको करना ही पड़ेगा। Clear? और इसके marks भी हैं, because to check the formula I'll click on any of the numbers and I'll see how you have generated these random numbers. मैम ये डॉटेड लाइन कैसे हटेगी? Escape button press करके। ओके मैम। ठीक है, so once you generate these uh, fixed random numbers, all of you generate prepare your fixed random numbers. जब हो जाए तो let me know. Done, ma'am. Okay. Others? मैम डन। Done, ma'am. Okay. Okay, now I'll tell you how we are going to do its processing. Okay, before I move on to the continuous series, हम इस individual series पे का भी basic चीजें find out कर सकते हैं. For example, if I want to find out the mean, right, then I want to find out the standard deviation. I can find out, right. उसके अलावा भी हम चाहें तो, अगर मान लो आप काउंट भी करना चाहते हो कितने नंबर्स हैं, वैसे हमें पता है 50 है, बट आपको एक फॉर्मूला नया समझाने के लिए आई एम इंक्लूडिंग दैट, सो वी कैन डू दैट, राइट. एक और फॉर्मूला, यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम नंबर and then you can even find out the maximum number. So these are few basic things of analysis that you can perform on these numbers. So to calculate mean is nothing but the average, right? इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर, राइट और नॉट? Yes, ma'am. तो इस केस में मीन इज नथिंग बट द एवरेज. सो टू फाइंड आउट द मीन यू सिंपली हैव टू राइट द फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज, राइट, एंड ब्रैकेट ओपन, एंड इट विल आस्क यू फॉर द नंबर्स जिनका आपको एवरेज निकालना है.
तो आप ये सारे नंबर्स जो हैं इंक्लूड कर लो. It's not till K17, rather it's till J17. ठीक है. So A13 से J17 के बीच में मेरे सारे numbers हैं. I'll find out its average. Clear to everyone? Can I press enter if you have seen? Yes, ma'am. And I click on enter. So it gives me an average or the mean value 547.2. इसने भी सेम वही चीज किया. एवरेज तो निकालते ही ऐसे हैं कि सब नंबर्स का सम ले लिया, डिवाइडेड इट बाय 50. राइट. मैं आपको इसको मैनुअली भी करके दिखा सकती हूँ. कैसे? इक्वल टू सम and I take the sum of all these numbers. Okay, and divided it by 50 because these are 50 numbers. It's still J17. Okay. When I press enter, you can see the answer is same, 547.2. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Second is calculating the standard deviation, right? So, in case of individual series, again, calculating standard deviation is very easy. Its simple formula is equal to STDEV and bracket open, and then you select the numbers जिनका आपको standard deviation निकालना है, and you close the bracket and press enter. So it gives you the standard deviation. You can see the formula in the formula bar equal to STDEV. Basically standard deviation को short में कर दिया. ST comes from the word standard and deviation comes from the word DEV. Right. So standard deviation is, and then you select all the numbers जिनका आपको standard deviation calculate करना है. Done. तो मैं next करवाऊँ. Yes, ma'am. Okay. Similarly, you can count also, although we know the number. अब देखो काउंट में भी बहुत सारे आते हैं ऑप्शन. जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहे थे तब भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. We'll do few of them, obviously not all, because there are so many formulas in Excel. It's not possible to do all, but yes, we'll be doing few of them as and when we'll be doing the questions. Right, over here I'm just supposed to use count, and I open the bracket and I'll select the values and it will count it for me. मैंने सारा select कर लिया, हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसने जितने भी नंबर्स थे उनको काउंट करके बता दिया कि टोटल 50 नंबर्स हैं आपके उस डेटा एरे में जो आपने सिलेक्ट करके दिया है. Similarly, for maximum number, for calculating the maximum number, we'll use the formula equal to max and select all the numbers. It will give us the maximum number out of this data array. इसमें जो भी maximum number होगा वो हमें दे देगा. Yes, somebody was asking something. मैम एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन का आप फॉर्मूला फिर से दिखा देंगे? हाँ दिखाती हूँ. अच्छा पहले ये मैक्सिमम वाला देख लो. द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन सी इज मैम मिनिमम 597. सॉरी. हाँ
मैम मिनिमम नंबर लिखा है ना साइड में जहाँ फॉर्मूला मैक्स का लगा रहे हो। ओके ओके ओके, चलो उसको मिन कर दो। मैक्स के लिए होता है एम ए एक्स और मिनिमम के लिए होता है MIN मिन। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर जनरेट कर दिया इसने। इसमें 500 वाज द मिनिमम नंबर, यू कैन सी हियर इट इज। एंड मैक्सिमम नंबर जनरेट करने के लिए इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज 597 is the maximum number. मैम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। हाँ, एक सेकंड। जस्ट मिनट। Yes, it is equal to STDEV. यहाँ से देख सकते हो, and then you have to select the numbers. डन मैम। And जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बेस चाहे आप इसको इसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 तक ही कर दो, 26.57। ये सबका हो गया एनालिसिस पार्ट। दिस इज एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। Do it fast till this point and then I'll explain. मैम आप 5 मिनट दे देगा, एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से करना पड़ रहा है, मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया था। ओके, करो। सब लोग करो प्रैक्टिस। आप सबका मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर सबका डिफरेंट आ रहा होगा। Ma'am, my minimum number is same 500. ओके, इनका जब हो जाए तो बता देना। यस मैम, बस मैम 2। Give me a minute, I'll just
Charging my laptop, huh? Yes, can we move ahead? Yes, ma'am. Okay. Now, सबसे पहले तो we are supposed to find out the class intervals. Okay. Now, many a times class intervals are given to you, and sometimes it's not given to you. So, but how many class intervals are to be prepared? That is given to you. Okay. For example, we have generated 50 random numbers between 500 to 600, and the question says prepare 5 class intervals. Right. So what would be your class intervals? And class intervals are equal, you know. तो 500 से 600 के बीच में आपने नंबर्स जनरेट किए हैं, तो आपके क्लास इंटरवल्स क्या होंगे? अगर आपको 5 500 to इक्वल, 520, राइट, 520 to 540, and so on. राइट. इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाई वी हैव टेकन अ गैप ऑफ 2020? 100 नंबर्स थे, डिवाइड बाय 5 कर दिया तो 20 आंसर आ गया आपका. क्लियर है सबको? यस मैम. अगर मैं बोलती दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर 10 क्लास इंटरवल्स, तो आप क्या बनाते हो उस केस में? 500 to 510, 510 to 520, and राइट. so on. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिए हो कि 500 टू 520 करना है, देन 520 टू 540, और मेनी अ टाइम्स इट्स गिवन दैट प्रिपेयर 5 क्लास इंटरवल्स. तो उस केस में आप ऐसे बनाओगे. ओके. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू कैन राइट द क्लास इंटरवल इन वन सेल ऑल्सो. जैसे 500 टू 520 आप एक सेल में भी लिख सकते हो, बट हमें ऐसा नहीं करना है. वाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट आई विल टेल यू. बट जो आपका लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की और अपर लिमिट है, आपको उन सबको अलग अलग लिखना है. ठीक है. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 500, एंड हियर आई एम राइटिंग 520. ठीक है. इनके बीच में माइनस साइन अगर आप अप्लाई करते हो, तो माइनस साइन अप्लाई करते ही क्या करता है वो, आस्क यू फॉर द सेल रेफरेंस. तो माइनस साइन अप्लाई करने के बाद एक स्पेस दे दो एंड देन प्रेस एंटर. देखो इसमें भी कई बार ये प्रॉब्लम करता है, बिकॉज माइनस साइन को इट अज्यूम्स कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने वाले हो. ठीक है. तो देख लो, अगर माइनस साइन नहीं आता तो आप कोलन वगैरह ऐसा भी कुछ लगा सकते हो, वैसे आ जाना चाहिए. एंड यू ड्रैग इट डाउनवर्ड्स. और यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 520 टू 540. नाउ नो नीड टू राइट इट योरसेल्फ, ऑटो फिल करो 580 तक. यहाँ पे ऑटो फिल करो 600 तक. तो आपके ये 5 क्लास इंटरवल्स रेडी हैं. Yes, all of you, please prepare the class intervals. Ma'am, can you please repeat? Actually, I got disconnected.
Okay. I was saying that you are not supposed to write the entire class interval in one cell, right? Rather, you have to distribute it in three cells. There is a reason behind that I'll be telling you later, today only, but not right now. So what we have done is we have written the lower limit of your class interval in one cell and the upper limit in the other cell. That's what I've done. Okay, ma'am. And then you write two limits and then drag it downwards 500 और 520 लिखो और फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑटोफिल से बाकी का फिल कर लो आप. No need to write it yourself. ठीक है, हो गया सबका इतना. Yes, ma'am. Okay, then we have to find out the x values, right? देखो, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, बट जब हम मीन निकालते हैं तो आर फॉर्मूला इज समेशन ऑफ f into x डिवाइड बाय the number, right? Sum of f. So x is basically because it represents an entire class interval 500 to 520 के बीच में. मैं एक किसी particular value के बारे में तो बात कर नहीं रही हूँ. It represents an entire class interval. So for that we have to find out one representative value, right? That is your x value. So the x value is nothing but the mid value, right? तो आपको mid value तो पता ही है वैसे. What is the mid value between 500 to 520? Ma'am, 510. 510. 510. But we shouldn't write it ourselves. Why should we do all the calculation when Excel is there? So we'll simply take the middle value. The formula is simple. I'll say whatever is my lower limit, to that if I add my upper limit and divided it by 2, right? 500 plus 520, that makes it 1020. 1020 divided by 2 makes it 510. एंड आई प्रेस एंटर, तो इसने मुझे 510 आंसर दे दिया और मैंने इसको सेम ड्रैग कर दिया डाउनवर्ड्स. तो खुद नहीं लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? और आप क्या कर सकते थे, दोनों का एवरेज भी ले सकते थे. दैट वुड हैव बीन आल्सो करेक्ट. तो इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस एंड देन दिस, तो भी आपका यही आंसर आता. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. बट यहाँ पे यस, ये चीज बहुत ध्यान से लिखनी है. A21 प्लस C21 दोनों को ब्रैकेट में करना है. यहाँ पे देखो आपका वो इम्पोर्टेंट है जो हमने ऑर्डर पढ़ा था. अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई नहीं करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, C21 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, उसमें फिर A21 ऐड करेगा. मैं करके दिखाती हूँ कि अगर मैं ब्रैकेट ऐड नहीं करती एंड आई वुड हैव डन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इस केस में ये पहले डिवीजन करेगा फिर एडिशन करेगा. तो 520 को इट विल डिवाइडेड बाय 2 and to that it will add 500. Your answer will be 760. So brackets are very very important. ठीक है, you can see in the formula bar. Lower limit plus upper limit divide by 2.
यस, कर लिया सबने? यस मैम। अदर्स? Yes, ma'am. Can I move to the next thing? Is there anyone who's left? Okay. Now, next thing is very, 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 very important. Please look at it carefully, because if you do a mistake over here, your entire question will go waste, right? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी गलत कैलकुलेट कर दी तो कई बार क्लियर कंटेंट से भी आपका आंसर जो है ठीक नहीं होता है, आपको फिर से पूरा करना पड़ता है एनालिसिस पार्ट. सो फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी देयर इज अ स्पेशल मेथड. बाकी जगह तो हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू दिस एंड देन वी ड्रैग इट डाउनवर्ड्स. बट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, what we do is, the very first step is that you have to select the area wherein you have to calculate all the frequencies. ठीक है, सिंपल फर्स्ट वाले ही सेल में नहीं लिखना है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, पहले आपको सिलेक्ट करना है. तो जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं यहीं से पता चल जाता है, वो यही स्टेप करते हैं. जो नहीं करते वो वही गलती करते हैं, पहले सेल को लिया और लिख दिया फॉर्मूला, तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट? तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जिन सेल्स में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, पहले उन सारे सेल्स को यू हैव टू सिलेक्ट एंड देन यू राइट द फॉर्मूला इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. फुल फ्रीक्वेंसी लिखना है, खाली एफ आर ई क्यू नहीं लिखना है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी लिखना है. एंड देन यू ओपन द ब्रैकेट, राइट? देन इट विल आस्क यू फॉर द डेटा एरे. डेटा एरे मीन्स कि बताओ कौन से डेटा में से फ्रीक्वेंसी ढूंढ ढूंढ के एक्सेल जो है आपको फ्रीक्वेंसी बताए, राइट? So my data array is what? My data array is these fixed numbers that I have. I want Excel to look for each and every number and start putting the frequency against the class interval. So this is the entire data array from which Excel will find out the frequency. Comma, you can see bins array. Right. Now bins array represents your upper limit. इसीलिए this is the reason why मैंने आपको upper limit जो है अलग से लिखवाई थी. अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक ही सेल में लिख देते तो आपको फिर यहाँ पे आप बिन्स एरे कैसे बताते एक्सेल को? बिन्स एरे मीन्स ओनली माय upper limit. So for bins array, I'll select this. It's C25. Yeah, right. Bins array is my upper limit, and that was your data array. Clear? And I close the bracket, and then again, very very important thing, I just don't have to press enter. पहले तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला लिखा, अब एंटर प्रेस किया. इस केस में वी हैव टू प्रेस 3 कीज टुगेदर, राइट? एक नहीं बल्कि तीन तीन कीज जो है आपको इकट्ठे प्रेस करनी है. दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, all three of them together. So I am pressing control शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, तो यू कैन सी मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया. एंड आई कैन फाइंड आउट ऑल्सो मेरा फ्रीक्वेंसी ठीक है कि नहीं बाय टेकिंग द सम. फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 50 होना चाहिए, क्योंकि 50 वैल्यूज ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहा है. सो यू कैन सी माय सम इज 50. All of you, please do frequency first. मैम मेरी तरफ से आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी जब आप अपर केस और लोअर केस में से बता रहे थे कुछ. Okay, I'm repeating again the entire thing. सबसे पहले आपको जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आप वो पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, लेट अस से मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बता रही हूँ, तो मुझे इन सब क्लास इंटरवल्स के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. देन यू विल राइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, पूरा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी लिखना है. देन डेटा एरे, जिस डेटा में से उसको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, कॉमा बिन्स एरे. बिन्स एरे मीन्स माय अपर लिमिट, तो अपर लिमिट को सिलेक्ट करना है. इसीलिए मैंने आपको अपर लिमिट अलग से लिखवाई थी. एक ही सेल में लिखते दोनों अपर अपर और लोअर तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती, राइट?
then I close the bracket, and then I don't have to press only enter. Rather, we have to press three keys together, right? All of them have to be pressed together, that are control plus shift plus enter. So I press control shift और enter प्रेस करते ही इसने मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी। भी 500 to 520 के बीच में 11 वैल्यूज हैं इस डेटा में, 520 से 540 के बीच में 9 वैल्यूज हैं, 540 से 560 के बीच में 11 वैल्यूज हैं, 560 से 580 के बीच में 13 वैल्यूज हैं, एंड 580 to 600 के बीच में 6 वैल्यूज हैं। सिंस इट हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द वैल्यूज वन बाय वन, इसने सब वैल्यूज को एक एक करके लिया होगा और फिर टैली बार्स बना के फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो ऑब्वियसली इसका टोटल जो है वो 50 होना चाहिए, क्योंकि इसने सारी वैल्यूज को लिया है। तो मैं अगर इसका सम लेके मेरा आंसर मैच हो जाएगा, सम कम्स आउट टू बी 50। अगर आपका मान लो 49 आ रहा था या 51 आ रहा है या 48 आ रहा है, इसका मतलब उसने सारी वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया है। इज इट ओके नाउ आस्था? Yes, ma'am. All of you calculate frequency. Ma'am, done. Okay. जब हो जाए सबका तो बताओ ना। Ma'am, done. ओके। अदर्स? Ma'am, done. हो गया सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ वो बता दो। मैम एक बार फॉर्मूला बता दो। फ्रीक्वेंसी का? यस मैम। ओके। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, पहले वो सारे सेल्स इकट्ठे एक बार ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? जनरली हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं और उसको ड्रैग कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी के केस में ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सो जहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। तो मैंने पहले उन सारे सेल्स को इकट्ठे सिलेक्ट किया, देन यू राइट फ्रीक्वेंसी। जब आप सबको सारे सेल्स को इकट्ठे सिलेक्ट करोगे, लिसन एवरीवन, तो बाकी के ग्रे में आएंगे, फर्स्ट वाला व्हाइट में आएगा, राइट? एंड देन यू राइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड ओपन योर ब्रैकेट, ठीक है? फर्स्ट इट विल आस्क यू फॉर द डेटा एरे। डेटा एरे मीन्स कौन से डेटा में से वैल्यूज
ढूंढ ढूंढ के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो मेरा डेटा सेट तो ये है, मैंने अपना डेटा एरे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा बिन्स एरे। अब वाइवा में भी पूछा जाता है व्हाट इज बिन्स एरे। बिन्स एरे इज योर अपर लिमिट, ठीक है, इसीलिए मैंने अपर लिमिट आपको अलग लिखवाई है। तो आप अपर लिमिट सारी सिलेक्ट कर लो, right? Then you close the bracket, and now you just don't have to press enter, rather three keys. I'm repeating this point, very, this is very, very important, right? Three keys together, control plus shift plus enter, right? The moment you press all three of them, you will see सारे cells में आपकी frequency will be able to see, and you can cross check your answer कि इसने सारी values को consider किया है कि नहीं। इसका sum जो आना चाहिए frequency का, it should be equal to the numbers that you have generated। तो मैंने यहाँ पे 50 numbers generate किए हैं, मैं frequency का sum लेके देख लेती हूँ। It is coming out to be 50। Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, can I move to the next thing? Can I move to the next thing now? अगर सबका हो गया तो Yes, ma'am. okay. Next is now I have to find out again standard deviation and mean in this case also. So for that, for finding out mean in case of continuous series, your formula is sum of fx, f multiplied by x divided by sum of frequency। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों को याद हो तो इस केस में मुझे एक और अभी कॉलम कैलकुलेट करना है, दैट इज एफ इंटू एक्स, राइट? क्योंकि आई नीड सम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो दैट्स वेरी सिंपल, इट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स, राइट? तो 510 मल्टीप्लाइड बाय 11 और उसको ड्रैग कर दो डाउनवर्ड्स, तो ये आपको एफ एक्स निकाल देगा। Will find out fx for you, and then you also have to find out the sum of fx, so you can apply the same formula या ड्रैग कर दो, क्योंकि यहाँ पे पर भी मैंने सम ही निकाला था। तो हाँ जी, fx कैसे निकाला? नॉर्मली मल्टीप्लाई करा है ना आपने हाँ एफ के हाँ कॉलम जी, यस यस, नॉर्मल में। मल्टीप्लिकेशन, f column multiplied with x, values in this column titled as f, कंफ्यूज मत हो जाना ये वाले f और x से। f multiplied by x या x मल्टीप्लाइड बाय f, एक ही बात है। डन मैम। क्या करो सब लोग, एफ एक्स फाइंड आउट करो। जब हो जाए तो प्लीज लेट मी नो।
Yes, done or not? Um, Okay, now you can calculate the mean also yourself. कुछ भी नहीं लिखना, equal to जहाँ पे sum of f of x लिया हुआ है उसका रेफरेंस दे दो, divide by जहाँ पे sum of f लिखा है उसका रेफरेंस दे दो, and press enter. It will give you the mean. इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. The place where you have the summation of f into x, select that and divide by the cell where you have the reference of f, sum of f. Can I press enter? yes, ma'am. So you will see your mean will be more or less similar to the mean that you had found out in case of individual series. वहाँ 547.2 था, यहाँ 547.6 है. Once you are done, just let me know. Done, ma'am. Done. Okay. Yes, others done or not? हो गया सबका मीन कैलकुलेट फॉर कंटिन्यूअस सीरीज? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Others, there are only 2 or 3 people responding. Are you people here? Others? Yes, ma'am.
Yes, ma'am, done. ओके, अनुभव हो गया? Yes, Faisal, done? Yes, ma'am. Okay. Sumit? Okay. Okay. Achal, Yes, ma'am. done? Himanshi? Yes, ma'am. Okay. Okay, good. Now, there are few things more to be done. But before I move on to the next thing, I would want you people to practice अभी जितना अभी तक करवाया है. So I'm giving you a question. ठीक है? All of you are going to do that first. You have to send me the pics in the group, and then अभी इसमें ये सब रहता है, standard deviation, skewness, kurtosis, counting numbers, sum of numbers. इसमें हम formulas करेंगे सारे new, और अभी इसका डायग्राम भी रहता है, पाई चार्ट. तो पहले आप फटाफट मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ इतना, and then we do further things. So write down the question. generate generate 100 random numbers between generate 100 random numbers between 200 to 500. Generate 100 random numbers between 200 to 500 and perform frequency distribution analysis on both individual and continuous data on both individual and continuous data. Prepare 6 class intervals. Prepare 6 class intervals. Okay, so you have to generate 100 random numbers between 200 to 500, right? And 6 class intervals are supposed to be prepared. Start doing the question. दोनों करना है, इंडिविजुअल के लिए तो पूरा एनालिसिस करना है, एंड देन कंटिन्यूस सीरीज के लिए फिलहाल अभी मीन फाइंड आउट करके बताना है. वन मोर थिंग, व्हेन यू डू इट फॉर कंटिन्यूस सीरीज, ऐसा करना पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, फिर लिखना एक्स कॉलम. उसके लिए पीछे क्या रीजन, आई विल टेल यू. आई शुड हैव आल्सो डन इट this thing first. After class interval, find out first the frequency and then the x value. It won't make any difference, but अभी जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें वो हेल्पफुल रहेगा ज्यादा. तो पहले फ्रीक्वेंसी का कॉलम रखना एंड देन फॉर एक्स कॉलम. ठीक है? Start doing it, and if you have any doubt you can ask me. Okay, ma'am.
Yes, any doubts? Any doubts? No, ma'am. Okay. करो continue. Yes, are you people able to do it? Yes, ma'am. Okay.
मैम डन। ओके, गुड। मैम स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप पे। हाँ भेजो, मैं चेक करती हूँ। अगर कोई उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आई टेल यू। यस, मेघा एंड स्पर्श, इट्स करेक्ट, दोनों का ठीक है, बिल्कुल। ओके मैम। ओके मैम। मेघा थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो प्रेजेंटेशन, जैसे फिक्स नंबर को कलर कर दो, जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड कर दो, या जो आपने इंडिविजुअल सीरीज का एनालिसिस किया है उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल को बोल्ड कर दो। अदरवाइज वैसे ठीक है। ओके मैम। स्पर्श, क्लास इंटरवल में इंटरवल की स्पेलिंग करेक्ट करो। ओके मैम। यस आर्यन, स्टैंडर्ड डेविएशन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कम कर दो। मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक तो है नो डाउट, बट कर दो उसको थोड़ा सा रिड्यूस। एंड ओके मैम। बाकी ठीक है। बाकी लोग भी भेजो, आई विल सी एंड टेल। क्लास इंटरवल्स तीनों ने बिल्कुल ठीक बनाया। आई एम हैप्पी टू सी दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हाँ ठीक है मेगा, ऐसे भी ठीक है। यस रितिका, इट्स करेक्ट। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस कर दो बस। और काउंट करो, काउंटिंग में 50 आ रहा है आपका रितिका। 100 होना चाहिए ना, 100 नंबर्स जनरेट किए ना, तो काउंट में 50 नहीं आना चाहिए। एक बार दोबारा चेक करो। No, ma'am, I generated 50 by mistake.
ओके, फिर ठीक है। यस, बाकी लोग भी सेंड करो, देन आई विल टेल। मैम कंटिन्यूअस सीरीज में तो सिर्फ मीन निकालना था ना। हाँ, अभी मीनिंग निकालना। हाँ जी, बाकी लोगों का हो गया। इट शुडंट टेक दैट मच टाइम, अब तक हो जाना चाहिए। मैम एक बार देख लीजिए, मैंने सेंड कर दिया है। हाँ, मैम मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगी, अभी मैंने वैसे ही सेंड कर दिया फिलहाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक लग रहा है। ठीक है। Yes, others, only 4 or 5 people have sent. मैम इसके बाद अभी आप कुछ करवाओगे क्या? नहीं, अब कुल मेरा टाइम अलाउ करेगा। हार्डली 10 minutes आर देयर। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने जो किया क्वेश्चन उसको भी सेव कर लेना, क्योंकि आप लोग फिर उस पर भी प्रैक्टिस करोगे अपना। ओके और मैम। इसमें भी एक दो ऑप्शंस और हैं, जैसे इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज करना है हमें। ठीक है। उसके अलावा भी हमें इसमें पाई चार्ट फाइंड आउट करना है। एंड then we also have to find out all these values, standard deviations, skewness, kurtosis and so on. तो ये we'll do in the next class. ठीक है। पर इसको ओके मैम। कर लेना अपने वर्क को सब लोग।